Sir, very good morning, sir. How are you? Fine, fine, bete. How are you all? सर आई थिंक अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ आपका. आप संडे 10 बजे क्लास लें या सैटरडे रात को क्लास लें, वी हैड मोर देन 500 रजिस्ट्रेशन इन जस्ट वन डे, राइट? एंड मतलब मैं आई हैव नथिंग टू से सर. इट इज लाइक गोइंग बैक टू द क्लासरूम एज वी स्पीक. अराउंड 200 participants have already joined the session. 183 is the right now count. So we'll just wait for a couple of minutes more, sir, because काफी लोगों ने register किया था. It's 10:03 right now. And let me just go through. तब तक क्या करते हैं सर, बड़े अच्छे अच्छे आपके जो फैंस हैं, हम जैसे जो बच्चे हैं, आपको लिख रहे हैं. ऋषि जैन आपको लिखता है, सर हैज गॉटन लिटिल ओल्ड. तो ऋषि जैन को आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप पहले सबसे ऋषि का comment अच्छा है. He's right. I'm aging, right? But I'll try to reverse the trend. ऋषि मेरा बच्चा है, ऋषि. और जैसे ही वो कमेंट लिखा, आप देखो मेरा दूसरे बच्चे ईश्वर ने लिखा, सर यू आर लुकिंग गुड. मतलब सर यहाँ पे मुझे बस ये टेंशन है कि है चैट बॉक्स में एकदम वो फैन बेस होता है ना कि नहीं सर को कैसे बोला. तो so you getting sir, Vikas says such a delight to be able to attend this session. Gurdev Somani, thank you sir. This needs to continue for long. So I think sir आपका जो finally we've got you here, and a lot of people are really looking forward. Actually, Guru जिन्होंने लिखा है कि we should continue for long, he is the kid who kept chasing me कि करना चाहिए, right, बाप रे, right. सर मतलब मैं सबको बताना चाहूंगा कि it took me a lot of time to convince sir, Dr. Menon, to come on board, and he was saying sir बच्चे आएंगे नहीं. मैं कहा सर आप सुबह 10 बजे भी करा के देख लो और रात को भी करा के देख लो, मिनिमम 200 बच्चा आएगा. और आप देख लिए. this is there's a Harshil Doshi writes, it is always a pleasure to see you while guiding us and helping us no matter how much we know. It's a bliss to sit for your lecture. So sir, I think मेरे पास भी इतने ज़्यादा मैसेज. So we've crossed 200 sir. We've crossed 200. 201 is the right now number. Sir, अभी 10:04 है. If you, with your permission, if you allow another 2 minutes, because I'm getting a lot of emails and messages that some people are trying to join now. And यही खासियत है सर entrepreneurs की. लास्ट मोमेंट करते हैं हम लोग काम, और वो भी बढ़िया काम करते हैं. इसमें I would like to say hello to everybody here. कुशल बच्चे, I can't think of anybody better than you. Our biggest fan बोल रहे हो, same to you. Sumit Kabra is my achiever. He's there. I think all of you all should know Sumit. RR Kabul is rocking. Got a lot of good news from RR Kabul also, right? And I cannot address every one of you all by name, so सबको मेरा नमस्ते. Thank you very much for coming in. Times are a bit difficult, so by nature I am shy. मुझे अच्छा नहीं लगता है, right? But I should thank Simarpreet, because he kept chasing me. Guru, Aditya, then I should say Karthik. ये बच्चों ने बोला कि sir please come on board. Finance is most important, right? So that's the reason this session. And though there was a request that I do it in Microsoft, I was more comfortable with Zoom क्योंकि मेरे US के lectures काफी Zoom में चलते हैं. So that's why Simar has got a very secure platform. That's the reason we are going ahead. If I may request Simar, humble request, wait for 1 minute, bete, then we should go. And yes, this is going to be a continual affair. Yeah, my promise to all of you all. And by the way, not only students, I can see a lot of colleagues who have come in. ISD is a dear colleague from Platinum, right? A lot of colleagues have joined in क्योंकि मैं उनको भी लिखा कि they can influence others. So today's session will be a mix of business and personal finance. So the way I plan to do it is, first session है, मेरा बच्चों लोग बोला 3 घंटा लीजिए, नहीं होगा, right? I want to go step by step क्योंकि attention span भी रहता है, and so I'm going to do it step by step. We will have it as a continuous affair, God willing. Definitely एक एक topic करके करूँगा. There are a lot of people in the industry who are doing a great job. Please उनके videos देखिए. They are doing a great job. मैं थोड़ा slow बोलूँगा because I don't want to show too much of energy. मुझे किसी को motivate नहीं करना है because all of you are already motivated. मुझे खाली आपको एक direction देना है. And my moderator, as you would know, is Simarpreet. Is Forbes Young 30 leader. So I requested him to come on board also because we have planned it as a question and answer session. And each one of you all
are an achiever. Thanks, Kavit. I just saw your message also. Thanks to each one of you all. Your love is what keeps me going. Times are challenging. We will not use the word crisis. Crisis word use नहीं करेंगे हम लोग. Challenging use करेंगे. And then we will see how to face this challenge. So this is the agenda for today. And I may request all of you all to make notes. All right, I will give you my materials, freely pass it on. मुझे कोई problem नहीं है. There is no IP. आपको record करना है, record भी कीजिए. One request, एक free webinar किया था मैंने मेरे बच्चों को SP Jain School of Global Management के लिए. Thanks to Samir sir who said that. फिर मैंने सोचा कि why only अभी आज के टाइम में खाली वो बच्चों के लिए क्यों करना है. I want to open it up. So today's session is for everybody. Please use it, right? And I have no IP rights. ये आपका ही है. You please pass it on. किसी का फायदा कर सकते हैं तो I'll be more than happy, more than happy to do it. Simar, I think correct, sir. Right? Yes, I think we should start. So Ishwarji, just to update, we are recording this session and we will send you the entire recording also for the entire session. So don't worry. But I think Dr. Menon sir की live class का मजा ही और है उस चीज का. So I think Dr. Menon, we should start. There are 237 participants right now, and people are adding as we speak. 238 हो गया अभी. I think we should start. So namaskar everyone. Very good morning. I just want to thank everyone for joining this session at such small notice. I think Dr. Anil Menon needs no introduction, and फिर भी मेरे को थोड़ा था कि at least एक formal जो introduction होता है वो दिया जाए. Dr. Anil Menon is a business coach, is a mentor. He's he's done his MBA France from Jamnalal Bajaj, and he has over 20 plus years of experience in teaching, in mentoring, in coaching. We know Dr. Menon all very well, right? He is also an author of a wonderful book also. I think मैंने बहुत पढ़ी है किताब, and I think काफी बच्चों ने भी पढ़ी होगी किताब वो. आज का जैसे सेशन सर ने भी बताया, it is जैसे सर ने मेंशन किया क्राइसिस वाला वर्ड. He was very clear कि समर एक क्राइसिस नहीं है, ये challenging times है. We don't have to mention anything on crisis or COVID or anything. This is challenging time. कभी भी आ सकता है. So this is going to be, as Dr. Menon already said, it is going to be a series, and let's start Dr. Anil Menon. And I think मेरे को कोई देखना नहीं चाहता इस time पे. It is all Dr. Anil Menon that they want to interact. So Dr. Anil Menon, your opening remarks, and before we start the question and answers. Okay, this will be a short session for 45 minutes, followed by a live case study of implementation. We will be doing it every Sunday. I am just requesting you all to give me 45 minutes of your time. If you want a fast-paced lecture, there is a free webinar I have taken for my students. वो मैं pass on कर लेता हूँ. There I have spoken very fast, but then that is available for you all. We will go stepwise. So I would request dear Simar to throw up the first slide. If I may request for the first slide. Why is this seminar? Why is the seminar on? So, all of you all, I call it the new normal, right? I have a very simple equation, mere bache, and my senior participants here. I call it the new normal, right? Now, this is a cliche word. I'm sure all of you remember 9/11. Okay, so till that time, going to airport was a breeze. Not much of security check, just walk in and things are done. 9/11 changed everything. There's a new normal now. You have to report some time earlier. You have to go through a rigorous security check. So my first request to all of you all is why this seminar is, there is a new normal bit. Let's get it very clear. The word is new normal. You have to live with it. Okay, you have to live with it. It is challenging times, right? A lot of people feel that, lockdown khul gaya hai, right? Things are going to come back to normal. I don't think so. So my personal opinion is, right, my first message to all of you all is the essence of this series of lectures and interactions that we will have is, please change with the new normal, right? So please, first point मैं आपको डाल रहा हूँ, new normal, right? मतलब जो पहला चल रहा था वो नहीं चलेगा अभी. Now you will have to come down to a new normal. Travel will be restricted, completely restricted. Social distancing will be the norm, right? Absolutely safety features, right? Safety features will be the next best thing, right? So this is my request to all businessmen, right?
this will be am I audible, Simar? Am I audible? Sir, आप थोड़ी वॉल्यूम इंक्रीज कर लेंगे सर? I'm sorry. I'm sorry. Right. It's much better, sir. It's much better. Now it's okay? It's Right. better, sir. Yeah, Better. sorry for that. So what I was trying to indicate, thanks Ishwar, what I was trying to indicate to all of you business people is that we have to learn to live with the new normal. We have to learn to live with the new normal. Okay, that's number one. Okay, having said that, better the second slide. So what is the first session all about? I will, first session will be on insurance and couple of things. And then second session, third session, fourth session, it will continue. So this free webinar virtual series will cover every single aspect of business, right? I don't claim that everything will be covered today, but yes, I will cover the most important thing today. Third slide, bache. Yes, whatever little that I have learned is right. God has been very, very kind, right, to give me, put me in a very advantageous position. My family, right, this lockdown period, I've been more busy than normal. Okay, though it is family time, right, I've been more busy than normal because people are in trouble and I need to address their queries, whether it is a bank moratorium, like yesterday Mihir Doshi, I'm not sure my kid is there in this group, right? We have not publicized this. This is just gone to 3-4 colleagues. So Mihir was asking me, sir, kya karu sir? Bank ne abhi bhi moratorium nahi diya hai, right? So I want to thank my family for allowing me to do this, right? Parents from both sides. I will take 30 seconds, but it's important. Dr. Shrikant, the earlier dean of SPJN, who's changed many lives, including me, Dr. Parimal Merchant, our director of the program, Professor Samish Dalal, Khiten Muchala, who made me do the first session, right? So they pushed me into the first session. We have a new colleague, Professor Jay Shankar, right? Colleagues, if you want to learn finance, please visit his channel, Learn Fin. It's very good, very, very good. Sabina Miss, again, thank you. And of course, dearest students. So these are the kids who I could recollect, who encouraged me for this webinar, right? Thanks, right? And all the friends who joined, right? I believe Harish sir and all have joined. They're all industry veterans. Mr. Harish Menon would have joined. Architect Gaurav would have joined. These are all industry veterans. Yeah, Harish sir has joined. But they have been here just to encourage and get this going. Thank you, sir. Thank you very much, sir. The next slide, please. So what are we learning? First thing, बच्चे, is remove your normalcy bias. थोड़ा डांट के बोलूंगा, मेरा स्टाइल नहीं है, राइट, लेकिन ये डांट के बोलूंगा. बेटे, आप लोग को लगता है थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल? नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है. थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल. मनन सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी लॉकडाउन खुलेगा May 4th को, एवरीथिंग विल कम बैक टू नॉर्मल. नहीं होगा. So first thing I'm telling all of you all is things will not go back to your good old times. Okay, वो तो पहला आप समझ लीजिए. What is the recovery? अभी ये बहुत डिस्कशन हो रहा है बच्चे कि ये U shape recovery होगा. So if you visualize U, कोई बोलता है slow recovery होगा, कोई बोलता है नहीं India rocking V shape recovery होगा. बच्चे, I am calling it a W shape recovery and not one W, series of W. आप heartbeat समझिए. अभी लॉकडाउन खुल गया ना बच्चे, अब देखिए कैसा सडनली द इन्फेक्शन रेट विल शूट अप. अगेन लॉकडाउन आएगा, फिर लॉकडाउन खोलेंगे. सी नाउ देयर इज अ बैटल बिटवीन इकोनॉमी बचाना है या लाइफ बचाना है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर ए लीडर. सो दे आर ट्राइंग टू प्ले द बैलेंसिंग गेम. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. मेनी ऑफ अस बिलीव नॉर्मल होगा सब, अभी May 4th को खुल जाएगा, ठीक होगा. नहीं होगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. बेटे, एक क्वार्टर नहीं गया है, 6 months have gone. ऐसा आप समझ के चलिए. That means you are running costs for 12 months. आपका revenues आएगा 6 months के लिए. Now you have to start thinking like this. मेनन सर ने क्या बोला है, एक क्वार्टर तो गया और नेक्स्ट क्वार्टर मॉनसून है, अरे वो भी जाएगा. मतलब मेरे पास 6 महीने है जिसमें रेवेन्यू करना है, and then I have to run costs for 12 months. So the normal things, you have to plan for growth of your business. Right, it has to be, that's your paramount. Inflation is inevitable, right? In fact, now I call it deflation. For all of you all who are so well read, oil has gone into negative territory. मैंने मेरे 50 साल के right लाइफ में मैंने आज तक देखा नहीं है कि you pay somebody, right, negative interest rate सुना है. अभी commodity oil has gone to negative. आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ. So these are the times we are looking at.
पर्सनल इंश्योरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ. टुडे आई वांट टू टॉक, एज आई सेड, आई डू टू थिंग्स, बिजनेस फाइनेंस एंड पर्सनल फाइनेंस, दोनों में बात करूंगा आज. दोनों आपके लिए है, राइट दोनों इंपॉर्टेंट है. प्रिपरेशन फॉर एनी इवेंचुअलिटीज, तो ठीक है. तो टुडे सेशन इज मोर अबाउट हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर राइट एनी इवेंचुअलिटीज. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट business insurance, medical insurance, and of course all right life insurances, etc. I'm not taking queries, right? There is a style to this. I'll finish, then you can always WhatsApp me your queries. The next slide, Simar Bete, if I may request. Okay, the first thing to all of you all, please go back, look at your business insurances. Please look at your business insurances. Stock is lying in your godown and you are underinsured. You are underinsured. So God forbid, first thing first, आपको सबको क्या करना है, especially business owners, आप ये नोट कर लीजिए, ये आपके नोटपैड में आप लिख लीजिए. मेनन सर, मेनन मंत्रा 1, टॉप अप इंश्योरेंस. अभी मेरा बच्चा है कृष्णा राणा जो अभी ज्वाइन किया हुआ है, राइट. कृष्णा राणा से बात हो रहा था. बच्चे ने लिया है इंश्योरेंस 3 करोड़ का, स्टॉक पड़ा हुआ है 5.5 करोड़ का. व्हाट विल हैपन नाउ? आपने ध्यान नहीं दिया है. RR Kabul, very big firm, I'm talking of crores. He will add 8 zeros or 5 zeros to it. Guru, right? All of you all my dear students, पहला जाके आपका इंश्योरेंस देखिए. And those who are attending these sessions, who are consultants, Harish sir and others, professionals, please just do this social service for me. Talk to your client and ask them, do you have the right insurance? Okay. I mean, there's a new controversy that has come up. So first request, top up your insurance, right? See if you are adequately insured, no underinsurance. Second point, but it's very sad, but there are some silences that has been brought to my notice, okay? And I want to thank my students who are in this industry, who have brought this to my notice, right? See, if your factory lies idle for 30 days, or if your store is not open for 30 days, अभी just dial का बच्चा आया रहेगा, right? तो उनके लिए या just in time का बच्चा आया रहेगा. Please note, it's extremely critical for you to note that there is a silent clause. The silent clause is, if you have not done activities for 30 days, your insurance ceases. अभी इस पे बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है मेरे बच्चों. कोई बोलता है नहीं ये वैलिड है, कोई बोलता है वैलिड है. मैं आपको एक सिंपल चीज बोल रहा हूँ, आप मुझे लिखिए, मैं आपको फॉर्मेट दे देता हूँ. आप आपके इंश्योरेंस कंपनी को लिखिए कि सर प्लीज एंश्योर माय इंश्योरेंस इज वैलिड. डोंट गेट इनटू दिस थियोरेटिकल डिस्कशन जो एकेडमिक सर्कल्स में चल रहा है. अरे ऐसा नहीं, वैसा नहीं, कुछ नहीं. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक साइलेंट क्लॉज करके एक फैक्टर पड़ा हुआ है, उसमें वो ट्रिगर हो सकता है. अभी वो इट इज कंट्रोवर्शियल. विल कोविड कम अंडर दैट साइलेंट क्लॉज? मुझे वो डिस्कशन में नहीं पढ़ना है. मैं मेरे बच्चों को क्या बोल रहा हूँ, आप एक फॉर्मेट मेरे से लीजिए. अमित भी बोल रहा हूँ, अमित अग्रवाल बोल रहा है, थैंक यू वेरी मच बेटे. दैट इज द स्पिरिट. ही कैन ऑल्सो शेयर द ड्राफ्ट. ओके, आप अमित को कॉन्टैक्ट कीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं सिमर को भेज दूंगा. राइट टू द इंश्योरेंस कंपनी दैट डू नॉट अप्लाई दिस 30-day पीरियड. नेक्स्ट, जब भी आप टॉप अप कर रहे हो, ये सब राइडर्स आप देख लीजिएगा, ये सब राइडर्स आप देख लीजिएगा, राइट. थैंक यू सूरज बेटे. दिस राइडर्स STFI, ओके, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, फायर, एस्केलेशंस, ओमिशंस, ये राइडर्स आपके पास रहना चाहिए. अर्थक्वेक, RSMD, राइट. एक बार रिव्यू करते जाइएगा, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, राइट. रिव्यू योर पॉलिसी. कोई एकदम गलत आपने पॉलिसी देखा भी नहीं है, यू हैव इंश्योर्ड योरसेल्फ फॉर द रॉन्ग प्रोडक्ट. मेरा कृष्णा, मेरा बच्चा उधर हंसता होगा. ओके, यू हैव इंश्योर्ड योरसेल्फ फॉर द रॉन्ग प्रोडक्ट. मत कीजिए. Look at whether you have got premium कम करने का चक्कर में मत जाइए. See if you have taken the right insurance for the right product. Very very important clause, reinstatement value clause. business insurance के लिए सबसे important critical है reinstatement value clause. extremely important. reinstatement value clause आप डाल दीजिए. it's very very important. last but not the least, my experience with dealing with you kids, सभी मेरे बच्चे हैं. आप लोग ने गलत एड्रेस भी डाला होता है आपके इंश्योरेंस पे. आप रहते हैं गाला नंबर 1 में, आपका एड्रेस आपने लिखा है गाला नंबर 7. तो आपने क्या किया है, थोड़ा मस्ती कर रहा हूँ, आप आपका नेबर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम्स भर रहे हैं. कल गॉड फॉरबिड कुछ हो जाएगा गाला नंबर 1 में जो आपका है,
इंश्योरेंस कंपनी हाथ ऊपर कर देगा, अरे ये तो रॉन्ग एड्रेस दिया हुआ है। एक बार आप देख लीजिए राहुल बेटे, रीइंस्टेटमेंट क्लॉज मतलब, राइट, रीइंस्टेटमेंट क्लॉज मतलब टू गुड गेट इट बैक टू नॉर्मल वैल्यू। रीइंस्टेटमेंट, एक क्वेरी आया है विच आई विल आंसर। थोड़ा सिमर बेटे, सॉरी, 1 मिनट के लिए स्टाइल चेंज करता हूँ। रीइंस्टेटमेंट मीन्स टू रिस्टोर इट बैक टू नॉर्मल वैल्यू। तो आप अगर रीइंस्टेटमेंट क्लॉज लोगे, तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा गोज अप एंड कुछ हो गया, बाय गॉड फॉरबिड कुछ हो गया, this reinstatement clause will ensure that you will get the exact value of the insurance. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट। मैं इधर लिखा नहीं, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट। अभी दुकान बंद है, धंधा नहीं हो रहा है, देयर इज अ ट्रिगर विच इज कॉल्ड एज फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट। मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरा धंधा ही बंद है। कैन यू राइट टू योर इंश्योरेंस कंपनी एज सेइंग दैट यू नो कैन यू प्लीज कॉम्पेंसेट मी फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट। अगर आपने ये लिया है एंड यू हैव द राइट एडवाइस, तो अभी आप इंश्योरेंस कंपनी को लिख के रखिए। मुझे पता है वो लोग क्या बोलेंगे, नो नो हाउ डज दिस इज एक्ट ऑफ, दिस इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड एंड ऑल दैट। एक क्लेम डाल के रखिए, देन लेट अस वेट फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड। जिन्होंने भी ये नहीं लिया है, मैं वापस बोल रहा हूँ, FLOP, फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट, अभी लीजिएगा। आपका वो राइडर रहना चाहिए, बहुत क्रिटिकल राइडर है। मैं जब ये भेजूंगा प्रेजेंटेशन आपको, मैं खुद उसको ऐड करूंगा। So this is my humble input on business insurance. Once again, do not be underinsured. Take proper insurance with riders. Having said this, the next, and this is for all of you all, the next slide, dear Simar, the next slide, bache. Now I would like to talk to you all about personal insurance. तो बिजनेस इंश्योरेंस हो गया, क्वेश्चन से लिख के रखिए बेटे, ये क्लास के बाद आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आंसर करता हूँ, राइट। पर्सनल इंश्योरेंस में ये सबके लिए है। गौरव जी आप सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, मैं प्रोफेशनल अयस खान जी आप सुन रहे हैं। देखिए पहला तो डोंट मिक्स इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट्स। सभी से यही मेरा रिक्वेस्ट है, डू नॉट मिक्स इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट्स। ये आप कर नहीं सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस मतलब एक ही चीज है, व्हेन अनिल मेनन डाइज इज हिज फैमिली प्रोटेक्टेड। तो एक ही इंश्योरेंस है, वो है टर्म इंश्योरेंस। बस मैं बार बार क्लास में बता चुका हूँ, ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्योर टर्म इंश्योरेंस, दैट इज ऑल यू नीड टू टेक आपका लाइफ कवर के लिए। इन्वेस्टमेंट का सेपरेट क्लास करेंगे हम लोग, वी विल डिस्कस दैट। आज इंश्योरेंस करेंगे, उसमें भी राइडर्स लेना। राइडर्स कैसे लेंगे आप, वो मैं बता देता हूँ। एक बहुत क्रिटिकल राइडर्स है MWP। आप लोग सब धंधे वाले हो, कल कुछ क्लेम उठ के आ सकता है, वो क्लेम आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे नहीं करेगी, राइट। आपने सोचा कि आपके वाइफ को जाएगा वो पैसा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम करेगी तो पैसा अटक जाएगा। आई विल गिव यू ए फुल प्रूफ मेथड, मैं एक फुल प्रूफ मेथड आपको दे रहा हूँ, जहां से मनी विल गो टू द मैरिड लेडी। ओके, इट इज नोन एज मैरिड वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट, MWP लीजिए। Nobody can touch that money. No government, no statutory authority can touch that money. तो पर्सनल इंश्योरेंस में आपको एक राइडर लेना है विच इज नोन एज MWP। ओके, वेरी, आप बोलोगे सर इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या है? नथिंग, कोई 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना है आपको। एक एक्स्ट्रा फॉर्म साइन करना है, एज सिंपल एज दैट। इट इज टू प्रोटेक्ट द वाइफ। आई रिपीट अगेन, मेनी ऑफ यू ऑल फील दैट इंश्योरेंस क्लेम्स में डायरेक्ट पैसा जाएगा, ऐसा होता नहीं है। So if it is for your wife, married women's protection. If it is not for your wife, if it is for somebody else, we have some other method which I'll discuss in the next class. Abhi, as I said, I want you all to be prepared for all eventualities. अभी तक क्या था, हम लोग कैसा लाइफ जी रहे थे? सब ठीक ठाक चल रहा है, राइट है, सब अच्छा अच्छा चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मेडिकल इंश्योरेंस इज गोइंग अप। अच्छा, अभी आप ऑल ऑफ यू ऑल आर सेइंग आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक सिंपल बात बोलूँ, I couldn't predict oil prices going to negative. मैं नहीं predict कर सकता था। और एक चीज बताओ मेरे क्लास को, cement prices are going up. How? I have no idea. Mr. Deepak Parekh, a great guy, I follow him. He says housing should be made affordable and cement prices are going up. So I am now looking at two extremes now. So now again I'm saying this, be prepared for all eventualities. So on one side prices will come down, on the other side there could be supply bottlenecks. Before you talk about business, first talk about yourself. You are responsible for yourself. You are responsible for your family. Health insurance.
मेडिक्लेम बहुत जरूरी है, उसमें राइडर्स लेना बहुत जरूरी है। मेडिक्लेम विथ राइडर्स लेना बहुत ही जरूरी बात है। उसमें 2-3 राइडर्स एक्सट्रीमली क्रिटिकल, आपको नेगोशिएट करना है। अच्छा बच्चे लोग सुन लो, इंश्योरेंस में भी नेगोशिएशंस होते हैं आजकल, आपको नेगोशिएट करना है। यू हैव टू टेल द एजेंट, एंड आपके एजेंट अच्छा है तो वो नेगोशिएट करके देगा। प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस, नाउ I have a serious problem. My father is 80 years old. मुझे अभी तक पॉलिसी नहीं मिल रहा था, and I was getting worried. God's grace, उसका आंसर मिल गया। बजाज सीनियर सिटीजन सुप्रीम प्लान आ गया आंसर। आपको ढूंढना है, बात करना है, राइडर्स ले लीजिएगा। है, एवरीबडी कैन बी इंश्योर्ड टुडे। वो जो जमाना गया कि 65 के ऊपर इंश्योरेंस नहीं मिलता है, जो हम लोग बोल रहे हैं ना, वो चला गया अभी, एब्सोल्युटली चला गया। यू कैन टेक इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन को भी इंश्योरेंस ले सकता है। आपको हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, मेडिक्लेम लीजिए। सेकंड, हॉस्पिटल, राइट राइट, आदित्य बिरला भी अच्छा है बेटे। हॉस्पिटल, राइट, हॉस्पिटल कैश अलाउंसेस, ये बहुत क्रिटिकल है। व्हाट इज हॉस्पिटल कैश अलाउंसेस? वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें, राइट, if you are hospitalized, then there is an amount that is paid per day, which you can use for any purposes. अभी there are so many things that Mediclaim will not settle, तो आप ये भी जरा ले लीजिए, बहुत सस्ता है। hospital cash allowances, look for this rider. This will give you some payout, maybe 5,000 rupees per day, जो भी है, which you can use for. Now Mediclaim will not pay for your food when you are hospitalized, and you may need a special diet. This is what will take care of that. Personal accident, the cheapest of them all, but then people don't take it. Cheapest, उसमें और एक दो चीज लीजिए, temporary and, sorry I have to say this, permanent. It is not a total, permanent disablement. Sometimes you may be disabled temporarily. Click that option, there will be a payout, right? All negative examples, I want to take it on me. Suppose I suffer an accident and I'm out of action for 4 months. My family has to run. This is the one, temporary disablement. This will ensure that there is a payout which comes from the insurance company. God forbid, the person is permanently disabled, then there will be a lump sum payout. So personal accident insurance, very cheap, but people don't take it. Please look at that, do it now itself. Last but not the least, Mediclaim क्या है ना मेरे बच्चे, it comes in when you are hospitalized. It need not be necessary that you are always hospitalized. That is where critical illness plan kicks in. So what is critical illness? God forbid, देखिए negative बात कर रहा हूँ ना, challenging times, so I want you all to be prepared. बस, sorry, but this is important. Suppose somebody is actually diagnosed with critical illness, there is a lump sum payment paid out. You don't need to be hospitalized. So somebody is diagnosed with a critical illness, जो भी है, I don't want to give examples. There are about 35 which have been covered by insurance companies. There will be a lump sum which is paid out. So at least family has this entire security, financial security. They will go through emotional turmoil. वो तो होना ही वाला है ना बेटे, emotional turmoil तो होना ही वाला है. But that financial security comes in if you take a critical illness policy. So here it is. My part 1 is over. I have 4 parts to cover. Part 1 completely over. I talked about business insurance. I talked about personal insurance. In personal insurance, I covered life, right? And I covered health. I got a remark from dear Suraj that Aditya Birla is covering 60 illness. Thank you very much, Bete. So that is information for the class. Thank you very much. In the chat, I saw a dear student writing that it covers 60 insurances. That's part 1. Simar, if, can we go to the next slide? Simar, Bete, please. Yeah, wait. Any questions? Simar, I'll take 2 or 3 questions, Bete, please, at this stage. Simar, 2 or 3 questions, please. Okay. There is a question from Priyant at this stage. Priyant is asking me a question that, should you take Keyman policy? Okay, I'll take 3 questions. But not that I don't want to answer, but 3 questions, right? Now, please understand, you can take Keyman insurance, but better than Keyman insurance will be term insurance. But if you want the expenses to be booked from the company, right? If you want the expenses to be booked from the company, then you can go with Keyman insurance. But please note, earlier the money that you receive from the company was tax free. Now that has been plugged. Whatever
right? Whatever money that comes in will be taxed, which is why I'm saying, if you want to enjoy the tax benefit, company name, take a key man policy. But जब भी पैसा आएगा उस पर टैक्स लगेगा, उसके साथ कंपेयर कीजिए, यू टेक योर डिसीजन. टर्म इंश्योरेंस नहीं, मैं पर्सनली पे करूंगा, लेकिन जो पैसा आएगा वो टैक्स फ्री आएगा मेरा फैमिली के लिए. सो दैट आंसर्स दैट क्वेश्चन. I will take the second question. Ideal insurance. Okay. Ideal insurance is basically which will get you back to normalcy, which is where I'm talking about reinstatement value. Reinstatement value, which right, reinstatement value. Which what is English? Reinstatement value means it will take you back to your normal position. Okay, so that is the ideal insurance. Ishwar is asking me a very personal question. Of course, Ishwar, you can please write to me. बेटे आप तो मेरे बच्चे हो. Please WhatsApp. I will give you some colleagues. एक दो references देता हूँ, and it will be a pleasure, right? And diabetes is covered. Only thing insulin होगा तो नहीं cover होता है, but normal diabetes is covered. But Ishwar, write to me. Let me see how I can help you here. Hardik, bete, premium to be paid from company or from personal. Proprietary है तो you can pay from your proprietary firm. Company hai to it is always better to take best group insurance. Please take group insurance. From day one, everybody is covered, even pre-existing diseases. Super question. I have not put it in my slides, right? Super question, right? If it's a company, आपको day one से आपको अगर insurance करना है, right? Proprietary firm, right? So please take what is known as group mediclaim policy. Day one से pre-existing भी cover हो जाता है. Okay, so many questions. Okay, but सब आंसर नहीं कर पाऊंगा, right? I am again saying this. I'm sorry, but बेटे आप लोग सबके पास मेरा नंबर है. अच्छा, कोविड स्पेसिफिक पॉलिसी ले ही नहीं रहा है. कोविड स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं लेना है. गवर्नमेंट का सर्कुलर आ गया है कि हेल्थ इंश्योरेंसेस शुड कवर कोविड. तो आपको वो नया मार्केटिंग चालू किया है कि भाई कोविड के लिए करना. बेटा यही प्रॉब्लम है ना दुनिया में, किसी का तकलीफ में पैसा पब्लिक उसमें भी पैसा चलाने का कोशिश करता है. मैंने देखा है वो एड पे 350 रुपीज. नॉनसेंस. गवर्नमेंट का सर्कुलर आ गया है, कोविड इज इंक्लूडेड अंडर मेडिकल इंश्योरेंस, सो आपको सेपरेट नहीं लेना है. निखिल बेटे, आई विल टेक दिस क्वेश्चन. यस, यू शुड लुक एट द इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ द मशीनरी ईयर ऑन ईयर. एक बार करके मत छोड़ना. यू आर ऑल एडिंग मशीनरी ईयर ऑन ईयर, तो आप प्लीज रीलुक at your insurance year on year. एक डेट डालिए आप, 1 अप्रैल को मैं एक काम करूंगा. आप एक मंथली, आपका एक ईयरली शेड्यूल में एक डेट डाल के आप कर लीजिए. आप करिए, और जो पर्सनल वाले लोग हैं वो लोग भी एक डेट डालिए. लेट्स से आपका मैरिज एनिवर्सरी का डेट डालिए और रिव्यू कीजिए आपका राइट इंश्योरेंस पॉलिसीज. दैट इज माय रिक्वेस्ट ऑन पर्सनल फाइनेंस. आपका either your kid's birthday or your marriage anniversary, right? Whichever you think is a good day for you. I mean, now I don't want to comment on that. Right, some of you will say मैरिज एनिवर्सरी से ज्यादा मैं बच्चे के नाम का बर्थ डेट करूंगा. जो आपको ठीक लगे वो अच्छा डे पे आप रिव्यू करते जाना. राइट, एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा मैं. राइट, प्लीज शेयर. अर्पित, आप तो मेरे बच्चे हो कलकत्ता से, एनी टाइम आई विल शेयर. आप खाली व्हाट्सएप कीजिए. राइट, एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई गो टू. कोविड का बताया, ईश्वर का बताया. Yes, Mohit, you can do it. You can write to me. I will connect you to somebody. We will try for it. There is nothing that cannot be tried. There is lot of Mohit bete. There is sorry to hear about that angioplasty, but there is nothing that cannot be covered. We will not give up. We will keep negotiating. Excuse me, silent clause. 30-day notice. लिखा है ना सबने? आपको करना है immediately. Insurance company को लिखना है कि भाई please note. My company is locked down for 30 days because of lockdown. Government notification. So silent clause will not be applied. And write to me. I will give you the format. As simple as that. We go on now. Thank you for your questions. बेटे थोड़ा मैं अभी request करूँगा. बाकी questions मैं next session Sunday answer करूँगा. Urgent है तो WhatsApp में answer करूँगा. I would request Simar to please come in. Part 2 of my discussion start. Simar, मेरे बच्चे, I am sorry I am harassing you, but can we have the second part of the discussions, please? Absolutely. 1 second, sir. Sorry, I couldn't answer all queries, but I promise you'll get an answer for each of this, either through WhatsApp or by the next session. Okay, by the way, participants, this is a Forbes under 30 leader who is helping me.
right, doing the slides. Okay, thanks. Right, I'm sorry for troubling you. Part 2 starts. Yes. Okay, the 7C model. The 7C model for challenging times. Challenging word starts with C. No crisis. We will not use the word crisis. Challenging times. Business is a game. मेरा सुमित मस्त बोलता है यार when he talks to my students. बच्चे ने I met him in 2010. आज क्या हो गया मेरा बच्चा, लेकिन फिर भी ग्राउंडेड है. वो मस्त बोलता है एक गेम करता हूँ सर, मेरे लिए एक गेम है वो. I enjoy the game. तो we will enjoy the game. ये आपका फ्रेमवर्क है. Right? All of you all please note the framework. 1. Cash is king. Cash flow is paramount. किधर किधर कैश बचा सकते हो, आपको अभी कैश बचाना है. एक सेमिनार होगा नेक्स्ट टाइम, इसमें कैश में मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा. राइट, अगेन फ्री सेमिनार होगा, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू ए पेड थिंग. फ्री सेमिनार होगा. राइट, लेकिन आपसे फर्स्ट रिक्वेस्ट है, राइट, कैश इज किंग. कस्टमर्स से पैसा निकाला है क्या? नहीं ना, करो अभी. दुखी कहानी सुनाओ कस्टमर्स को, खुद का पैसा अटका ना. स्टार्ट क्राइंग फॉर योर मनी. रिमेंबर वन थिंग, it is a crying baby which gets milk. That's a law of nature. So you have to cry. और सच बात है, we are all in trouble. So please understand, right? One, cash flow, extremely critical. Second, Yogesh, your this thing taken, very, very valid suggestion. Thank you, bete. Right? Now nobody should chat. Right? योगेश बोलता है इट इज डिस्टर्बिंग द फ्लो. सो ठीक है, आई एग्री, नोबडी विल चैट. चैट बंद कर दी. अच्छा सिमन, नहीं, चैट बंद नहीं करना, बच्चों को लाइट दे दीजिए. आई विल इग्नोर इट. ओके, सो 1, कस्टमर्स से बात करना, सप्लायर से बात करना, कैश डिस्काउंट्स लेना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सेकेंड सी इज कम्युनिकेट टू ऑल स्टेक होल्डर्स. एम्प्लॉयज से बात करना, सैलरी कट करके वर्ड यूज नहीं करना है. यूज करोगे तकलीफ में आओगे. You will get into trouble. Very simple. The word is salary deferral. Oh, I have got an expert, Sandesh Mistry sir, also speaking. Thank you very much, sir. Wonderful. You have also come in. Thank you, sir. Pleasure and honor. Right? Right. Please understand, do not use the word salary cut. Incidentally, Sandesh sir has sent me a lot of circulars on this. One very good thing I got yesterday, I forget किससे मिला. मुझे लगता है संदेश साहब से मिला है शायद, right? या ईश्वर से. गोदरेज का एक मुझे अच्छा एक मिला, एक लेटर, वेर वेरी स्मार्टली उन्होंने एम्प्लॉयज को बोला है कि प्लीज नोट, यस संदेश जी ने भेजा है, राइट, प्लीज नोट, टफ टाइम्स है, हम लोग भी, वी आर ऑल्सो सर्वाइविंग, यू ऑल्सो शुड सर्वाइव. द वर्ड इज डिफरल. इफ यू स्टार्ट सेइंग कटिंग सैलरी, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, राइट, इट विल नॉट होल्ड गुड इन द आइज ऑफ लॉ. तो हम लोग ने क्या किया है वो कृष्णा बता देंगे आपको. कृष्णा हैज इम्प्लीमेंटेड इट. राइट, डिफरल वर्ड होना चाहिए. टॉक टू दम, से कि भाई 20% कट है. राइट, इसमें मेरा डायरेक्टर परिमल सर बहुत वेरी गुड एक्सपर्ट, ही नोज हाउ टू कम्युनिकेट एंड ही हैज कम्युनिकेटेड सो वेल विद ऑल ऑफ अस कि बस लास्ट ईयर के टारगेट्स आएंगे तो आपका पैसा आपको दिया जाएगा. बट अभी के लिए वी आर कंजर्विंग कैश. कंजर्व रिसोर्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे. डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. रिसोर्सेस, व्हेन आई विजिट सम ऑफ यू ऑल एंड हैव हैड द प्लेजर ऑफ विजिटिंग सम ऑफ यू ऑल, बेटे आई कैन सी अ लॉट ऑफ फैंसी ऑफिसेस. अच्छा है, नथिंग रॉन्ग, बट बेटे अब भी थोड़ा सोचिए, राइट, आगे के लिए. डू यू नीड अ फैंसी ऑफिस टू डू बिजनेस? आई एम नॉट श्योर. सो ये सब थोड़ा मोटा चीज है, बट यू नो, कंजर्व रिसोर्सेस. माय थर्ड पॉइंट इज एज फार एज पॉसिबल रीलुक. Wherever you can save that single penny, save it. I'm not saying it right out of hurting anybody, but I have to make a statement. Government is allowing deferral of some dues. Right? Government is allowing deferral of some dues, provided you pay them 9%. Right? तो वो भी जरा एग्जामिन कीजिए कि ओके, मेरे पास पैसा नहीं है अभी, तो कैन आई डिफर दैट पेमेंट टू गवर्नमेंट, बिकॉज आई हैव टू अल्टीमेटली पे ओनली 9%. राइट, एंड if you feel that the cost of funds is low, 9% is low, legally you can go ahead and do it. बच्चे TDS वगैरह में be very careful. वहां पे please understand you cannot default. वो penal action आ जाएगा आपके ऊपर. So be very clear कि कहाँ पे क्या कर रहे हो. The word is conserve resources. Next, आपके product पे देखिए बेटे, be very clear. People are going to come back and negotiate on prices now. Be ready.
आप भी करने वाले हो, आपके कस्टमर भी करने वाला है. So now look at your product features. Please look at your product features. क्या क्या redundant है उस पे? Is it something which is not adding value to the customer? Try and remove that. Product features, process features, start relooking. Manufacturing वाले process features. Can you cut costs, right? Can you keep looking at it? Professor Moradian, our guru, right? He keeps saying that, can you increase your turnaround time, right? At all points of time, can you look at increasing your turnaround time? वो मूडा वर्ड यूज करता है सीनियर. So can you cut down your muda? ये आपको करना है. Okay, we will have some live examples. Cost control, very very critical. बच्चे आप लोग zero based budgeting करना. What is zero based budgeting? Start from zero. आप लोग क्या करते हो? लास्ट ईयर के खर्चे लेके ये साल का प्लान करते हो. नहीं करना. जीरो बेस से स्टार्ट करना. व्हाट इज जीरो बेसिस? मैं आज अगर ये बिजनेस चलाओ तो व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट दैट आई हैव टू बेयर. ये जो आप लोग करते हो ना कि इसमें मैं 5% कम करूंगा, इसमें मैं 10% कम करूंगा, मत कीजिए. सिट डाउन, डू ए जीरो बेस्ड बजटिंग कि ये क्या है, व्हाट इज इट दैट आई एम एडिशनली हैविंग. फॉर एग्जांपल, today a lot of coaching classes have done away with certain things. What they have very smartly done, and God bless them, they have done away with distance. They straight away go, thank you Amit bete, thank you very much. They have done away with distance. Aaj online classes start kiya hai. New normal. Are you prepared for the new normal? Is the point I'm asking every one of you all. Zero based budgeting, ye aapko karna hai. Look at your right, look at your business from a fresh angle. Past ho gaya, abhi kya? Convert your fixed cost to semi variable cost. अभी ये definition तो आपको सबको पता है, fixed cost क्या है, variable cost क्या है. But just 1 minute. Fixed cost is irrespective of your sales or production. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, fixed cost को कम कीजिएगा. For example, ये जो salary का मैंने बोला, it's a conversion from fixed to semi variable. मैं क्या बोल रहा हूँ, Simar, I am paying you 2 lakh rupees per month. Sir, I can't pay you so much. I will pay you 1 lakh per month. Plus that other 1 lakh, no, I'll give it to you as performance-based incentives so that, when the target is achieved, you will get that 1 lakh. Now, Simar may not agree for 1 lakh reduction, but he'll come down to 1.5 lakhs. That 50,000, now you've made it semi-variable. Rent. ये जो भी हमने आपको पढ़ा है, ये सब fixed है. Revisit कीजिए. Use a clause known as force majeure clause. Times are new, so you have to revisit at every stage. And बेटे आप लोग से ज्यादा कौन कर सकते हैं, आपका business, you are the masters, right? Revisit. ये fixed expense है, इसको मैं convert करूँ क्या? Semi variable. Variable will be, right, an extremely important thing linked to your sales, linked to your cash flows, right? Number 5, right? अभी ये आपको मैं points दे रहा हूँ, सोच के रखिएगा हर एक point को. बाद में, right, we will elaborate in greater detail, right? So fixed costs, कम से कम, जीरो बेस्ड बजटिंग एंड कन्वर्टिंग इट टू सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ये बहुत बड़ा असाइनमेंट आपको करना है. एंड प्लीज डू नॉट से आपसे नहीं होगा. मुझे पता है कोई जन बोलते, मेरे बच्चे नहीं बोलते, बट टुडे वी हैव गॉट अराउंड 350 odd participants. Maybe 1 or 2 of you will say होता नहीं है. तो I have got somebody who has implemented these things. मैं वो केस स्टडी चलाऊंगा. एंड एवरी सेशन मैं एक केस स्टडी करूंगा. मेरा वो स्टाइल है. I will get somebody who has implemented it. तो ये 4 points, remaining 3 C's will come in the next slide. Simar bete, next slide bete, please. Okay, customers. Talk to your old customers. बात कीजिए उनसे. आप खाली रिकवरी के लिए बात कर रहे हैं. Ask to them, is it everything okay with your family? थैंक यू वेरी मच. वो आपको कहानी सुनाएगा, वो बहुत तकलीफ में है, लेकिन आपको भी रेडी रहना है कि आप भी तकलीफ में हो. सेकंड, हैव यू आइडेंटिफाइड न्यू कस्टमर्स? हम लोग बोल रहे हैं, मैं आपसे सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट इज योर मार्केट शेयर टुडे इन द लाइन ऑफ बिजनेस? यू मे बी 5%, 10%. अभी कोई बच्चे रहेंगे बोलेगा मैं 15% है. चलो ना, मान लिया आपके प्रोडक्ट में आपका 15% मार्केट शेयर है. नहीं होगा, मैं पक्का लिख के देता हूँ 10% से नहीं होगा. चलो ना, आर्ग्यूमेंट से के लिए मैं बोलता हूँ 15%. बाकी 85% को आपने कांटेक्ट किया. लॉकडाउन था, यू कुड हैव कॉन्टेक्टेड देम. अभी भी टाइम है. और वापस बोल रहा हूँ, मई के बाद वापस लॉकडाउन होने वाला है. लॉकडाउन ओपन इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो रीच आउट. सोशल मीडिया है, टॉक टू न्यू कस्टमर्स, अरेंज informative sessions for them so that they get attracted to you, right? Today is the time where you can hold somebody's attention. वो घर पे बैठा है,
You can hold his attention. When he is in normal work, he will not be able to hold his attention. जुने customers जो आपसे छूट गए हैं, lost customers, have you reached out to them? कीजिए ना बेटे, अभी इज द राइट टाइम. अभी आपका कोई लॉस कस्टमर्स थे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कोई ना कोई छूटा होगा आपका 5, 10, 15 साल में. रीच आउट टू देम. हेलो, राइट, आई जस्ट टेक ए नेम. हेलो सुमित, राइट, वी वर डूइंग बिजनेस, होप ऑल ओके. नहीं नहीं, मैं बिजनेस के लिए कॉल नहीं किया है, मैं खाली आपको कॉल किया है कि सब ठीक है ना घर पे. राइट, गुड, राइट, इफ यू नीड एनीथिंग प्लीज लेट अस नो. Connection re-established. Maybe there was a mistake done by us, by which we lost that customer. We can rectify that mistake, get that customer again. I am sure none of you all are so bad that you are out to cheat customers. So this is my fifth mantra, fifth Menon mantra. Existing customers, reach out to new customers, reach out to lost customers. जो आपसे छूटा है उनको reach out कीजिए. अभी भी time है. हेलो बोलिए. Keep informative sessions. ये अभी आपको करना है. Keep informative sessions. लोग जुड़ते जाएंगे. Right? Right. Next point that I would like to say, can you think of new products? I'm so proud to say एक सेमिनार किया था मेरे GFMB 12 के बच्चों के लिए, and one lady wrote back to me, नासिक का बच्चा है कि sir we launched a new product, right, for COVID times. वो बच्ची ने कुछ she kept when you enter the plant you will be disinfected, and she's trying to sell it. अच्छा लगा. So can you think about new products? Less margin products should be phased out. So आपके products में अभी आपको segmental analysis करना है. What is the margin that is coming from each product आपको करना है, and then you can always look at one measure. बेटे, ROI, return on investment. Business is all about return on investment. अगर आपको इसमें ज़्यादा details चाहिए, refer to a textbook या visit that website known as LearnFin. Professor Jaishankar has got a lovely video on ROI. ये ROI मन में रखिए. 2% का business होगा आपका, कोई problem नहीं है. Return on investment. ये इसके ऊपर धंधा चलाइए, right? Small or big, it's all about return on investment. All capital expenditure to be deferred, completely deferred. Capital expenditure अभी defer कीजिएगा. Don't try to plan. बहुत sorry नाम नहीं बताऊंगा, maybe वो बच्चा है भी इसके अंदर, right? वो बच्चे ने फोन किया मुझे, right? फादर पूछ रहा है नया क्या स्टार्ट करना है. मैं बोला सर नया आप ऐसा सोचिए 3-4 चीज. फिर वापस फादर बोल रहा है मेरे पास इतना जमीन पड़ा हुआ है सर, आप कुछ ऐसा बताओ कि अभी मैन्युफैक्चरिंग में नया क्या स्टार्ट करें. नाउ दिस गोज अगेंस्ट माय बिलीफ. मैं बोला सर नो, आई डोंट थिंक आज के टाइम में आपको कैपेक्स करना चाहिए. आई कांट प्रेडिक्ट. मुझे नहीं मालूम डॉलर रुपये किधर होगा. आई डोंट नो. मुझे नहीं मालूम डिमांड कितना और गिरेगा. फिर वापस डैड पूछ रहा है, बच्चा बैठा है, डैड पूछ रहा है नहीं नहीं सर वो जमीन है ना, इतना गज का जमीन और दैट लैंग्वेज. तो हम सोच रहे थे कि अभी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करें. मैं बोला सर बिफोर यू इन्वेस्ट कैपिटल ट्राई फॉर एसेट लाइट मॉडल्स. थोड़ा ध्यान दीजिए ना उसके ऊपर. एसेट लाइट मॉडल्स. आप अभी लोन लेके आपको लोन मिल जाएगा बाय गॉड्स ग्रेस. ऑल ऑफ यू ऑल विल गेट ए लोन. आप प्लांट लगाओगे, एग्जिस्टिंग आपका यूटिलाइजेशन ही 40% है, 50% है. आप नया प्लांट लगा के क्या करोगे? आपको पता है क्या होने वाला है आगे? अगर आप 100% श्योर है और आपके पास कैपिटल है एंड देयर आर सम बिग पार्टिसिपेंट्स हियर, गो अहेड. बट बाकी लोग के लिए मोस्ट ऑफ यू ऑल, आई थिंक यू शुड डिफर कैपेक्स. वेट, आई कॉल दिस द वुका एनवायरमेंट, VUCA. ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप प्लीज जरा गूगल में जाके इसका फुल फॉर्म देखिएगा. संदेश जी मत बताइएगा. वुका इज द न्यू वर्ड. बिजनेसमैन आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं. वुका का फुल फॉर्म देखिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी डिफर्ड. Last, right, Sharad, I will answer this question better, definitely. Last but most important point, register for Udyog Aadhar. मेरे बच्चे लोग कोई तकलीफ में है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सैलरीज पे करने के लिए नहीं हो रहा है. You can go to your bank and ask for additional working capital. अगर आपका लोन NPA नहीं है, it is already a performing asset, so you can go to the bank and write for an additional working capital. Banks will give. RBI is also pushing. RBI ने अपना काम किया है. You will get that additional working capital. ये जो मेरे बच्चे तकलीफ में हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ. जो कैश रिच है वो सिटिंग ऑन कैश, मेरा रिक्वेस्ट आपसे है, डू नॉट टेक द मोरेटोरियम. तो एक सर्कुलर आया है RBI से कि गिव मोरेटोरियम टू ऑल क्लाइंट्स. अगर यू आर सिटिंग ऑन कैश, डू नॉट टेक मोरेटोरियम, because it is not interest free funds. Interest free funds नहीं है वो.
इट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो 3 महीने के लिए आप पे मत कीजिए ईएमआई, लेकिन इंटरेस्ट जोड़ के देगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, यू नो, एंड इट इज राइट ऑल्सो, बैंक्स अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आपको फंड्स नहीं चाहिए, डू नॉट अप्लाई फॉर मोरेटोरियम। ओके, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, किसी किसी को लग रहा है, फ्री नहीं होता है। जो तकलीफ में है मेरे बच्चे, नो प्रॉब्लम, बैंक को लिखिए, आस्क फॉर एडिशनल वर्किंग कैपिटल, you will get it if you are a performing asset. Okay, keep register yourself for उद्योग आधार। मैं बार बार बोल रहा हूँ, many people say sir हम लोग रजिस्टर हो सकते हैं क्या, हम इतने बड़े हैं। देखिए बेटे, क्लॉजेस है, एग्जम्पशंस है, रिटेल को कवर नहीं कर रहा है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। there's a retail chain of sweets, right? Is it covered? As per norms it is not covered. There is a retail chain of watches, as per norms it is not covered, लेकिन मैंने उसमें एक loophole find out किया। 50% of their income comes from servicing that watches, so they are no longer a retail chain। मैंने बोला आप उद्योग आधार के लिए रजिस्टर कीजिए। So my request to all of you all, ये if होगा क्या सर, नहीं होगा, छोड़िए ना, रजिस्टर करके छोड़ दीजिए ना। आई एक्सपेक्ट ए बिग स्टिमुलस पैकेज टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी तक आरबीआई ने अपना काम कर लिया है, गवर्नमेंट ने हमको घर पे बिठाया, बत्ती जलाया, दीप जलाया, सब करवाया, अच्छा है। अभी एक स्टिमुलस पैकेज आएगा, बड़ा स्टिमुलस पैकेज आएगा। आई डू नॉट नो, मैं क्वेश्चन मार्क डाला है, आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन, मैं पढ़ते जा रहा हूँ। नितिन गडकरी जी का आप प्लीज इंटरव्यू सुनिए, थोड़ा आइडिया आ जाता है कि व्हाट इज द गवर्नमेंट लुकिंग एट। गवर्नमेंट इटसेल्फ इज रनिंग थ्रू ए स्मॉल क्राइसिस, but you can expect a stimulus package for right the industry, so await that। उसके लिए पहला आप रजिस्टर कीजिए उद्योग आधार के लिए। yes, I will take that suggestion that I will not take questions but I will take one chat। कुछ तो एक chat मुझे interesting लगा, कुछ बच्चा बोलना चाह रहा है। yes, Nilesh is giving a very good feedback for my class, thank you very much। right, HDFC Bank is, this is the pleasure of interacting with you all, मजा आता है, मैं कुछ सीख के जाता हूँ आपसे, राइट, थैंक यू वेरी मच। HDFC बैंक इज गिविंग एडिशनल एडॉक 15% वर्किंग कैपिटल ऑन एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल लिमिट। थैंक यू वेरी मच नीलेश, पार्टिसिपेंट्स प्लीज यूज इट। शशांक बेटे, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये कैन और क्वेश्चन मार्क नहीं पूछना, रजिस्टर करना बस। आप ऐसा समझना कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, राइट, तो आपको रजिस्टर करना है। देन उसके अंदर हम लोग क्या लूपहोल से बाद में देखेंगे, वी विल नॉट गेट इनटू टेक्निकलिटीज। अगर आपको टेक्निकल आंसर सुनना है तो देयर आर एग्जम्प्टेड कैटेगरीज, रिटेल सर्विस प्रोवाइडर को एग्जम्प्ट किया हुआ है, लेकिन आप प्लीज रजिस्टर करके रखना, इज ऑल आई एम सेइंग। आई एम आस्किंग यू फॉर 5 मिनट्स, रजिस्टर करके छोड़ना। मैं इसका टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं खाली क्या बोल रहा हूँ, आपको ये रजिस्टर करना है, आपको इंश्योरेंस कंपनी को लेटर लिखना है, इतना ही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ESIC को एक लेटर लिख लीजिए, कैन यू पे सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज। अभी देखिए, मेरे को कॉन्ट्रडिक्ट मत कीजिए प्लीज, इट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट, मुझे भी पता है होगा नहीं, 90% चांस होगा नहीं, बट आई एम प्रेइंग कि 10% होगा। राइट टू ESIC, राइट। अंकित, लवली कमेंट, लवली कमेंट अंकित, चैट में देखिए अंकित ऐसे सुपर फीडबैक फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू अंकित अग्रवाल। देखिए बेटे, ESIC को लेटर लिख रहा है एसोसिएशन, सेइंग दैट कैन यू पे द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। देखिए, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, नहीं ऐसा कैसा होगा, लिखिए ना भाई। एक देयर इज एन अटल वाजपेयी योजना, अंडर दैट पीपल हैव रिटन। मैं आपको फॉर्मेट दे देता हूँ, आप भी लिख के रखिए, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, एक लेटर तो भेजना है आपको, भेज दीजिए, सिंपल आंसर, राइट। उद्योग आधार, ESIC रजिस्ट्रेशन, राइट, 7C मॉडल। Having said that, stimulus package, but I have no details. I have to wait for it. आएगा तो मैं उस पर और एक सेमिनार लूंगा पक्का। As of now, I have no information. आएगा। As of now, I can only tell you, RBI is pushing banks to lend. उतना मेरे को समझ गया है। रिवर्स रेपो कम किया है, LTRO लेके आया है। RBI is pushing banks to lend. Okay, banks are not lending because they are scared of NPAs. So if you are a good asset, please approach the bank. You can approach SIDBI, as my kid said. You can approach private banks also. इन्वेस्टमेंट पे आज बात नहीं होगा, सेपरेट क्लास होगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अनिकेत को थैंक्स, राइट, वो मेरा बच्चा है, वो डेट का ही प्रेडिक्टेड। लास्ट वीक वो बच्चे ने मुझे कॉल करके बताया कि सर डेट में बहुत तकलीफ हो रहा है, और वो हो गया। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन का बहुत बड़ा इशू है। इन्वेस्टमेंट का क्लास बाद में होगा, आज नहीं होगा। सो दैट्स माय 7C मॉडल, आई विल रिपीट इट अगेन। सिमर बेटे, कैन यू जस्ट गो बैक, मैं क्विकली इसको रिपीट करना चाहता हूँ, देन पार्ट 3 विल कम। कैश फ्लो, कम्युनिकेशन, कंजर्व,
cost control, zero-based budgeting, fixed to variable, right? Customers reach out, right? Capital expenditure deferral, capital raising if needed, right? If not needed, no moratoriums, keep project report ready, wait for stimulus package, register for Udyog Aadhar. Okay, that's all. Write a letter to ESIC for payment of salaries, right? Yes. उद्योग आधार रक्षित बेटे is a very simple mechanism. आपको इंटरनेट पे जाना है, you have to answer 10 questions, right? You have to answer 10 questions and registration is done. And I respect there are 360 odd participants here. There'll be some very senior consultants. Sir, I know with folded hands, even I know it is not applicable for many. Again, I want to protect my kids. That's the reason I'm asking them to register. It's a 5-minute affair, and I'm praying to God that that exemption will be removed. That's the reason. But I agree with many of y'all that yes, government ने clearly बोला है certain sections will not come under Udyog Aadhar. Yes, Simar bete, my part 3. Thank you, bete Rakshit. Simar bete, part 3. So right time for me to tell you कि sir आपने बहुत अच्छा class था. Thank you. But as I keep saying, the real proof of the pudding lies in eating, right? तो कृष्णा राणा के बारे में 2 चीज बताना चाह रहा हूँ. बच्चा बहुत तकलीफ में था, राइट? जो बच्चे को पहचानता है, लेकिन he is rocking today. बहुत ज्यादा तकलीफ में था, and I have his permission to say so, right? So this kid has seen the worst of times, which I prayed happens to none of us. Worst of times, okay? इतना ही मैं बोलूँगा, right? He has been penalized for no mistake of his, okay? लेकिन since it is public information, let me tell you, my kid had, my kid went through a very bad patch, right, in life, right, and today he has come back very strongly. He has started a company, right, and during lockdown period, I personally don't consult क्योंकि मुझे नहीं, I'm happy teaching बच्चों को बताना, and there are so many good people around here. They do a much better job than me in consultation, right? So I am very happy with what I do. मेरा reading, मेरा teaching, बच्चों के साथ प्यार रहता है. लेकिन कृष्णा को मैं थोड़ा गाइड किया लॉकडाउन पीरियड्स में, बिकॉज आई फेल्ट ही नीड्स दैट गाइडेंस. He needs that guidance, right? So and one more thing, I want to convince all of you all that whatever I've said today is not only theory. It's not only theory, it is practice. It is practice. So now I will come back. Nimesh, your request is taken. I will talk this in a later seminar, but I continue. I'm planning to keep this as a continuing seminar, and I will talk about this, right? I will go through each of the chats. So now I hand it over to my own kid, Krishna Rana, Platinum Industries, who is today come back and coming back strongly. Over to you, Krishna. Go ahead, please. Thank you so much, sir. It really felt that we are back to our FMB days. And I really miss those class sessions that, we always used to have 100% attendance during your lectures. Thank you so much, Simarpreet, for inviting me, for this panel discussion. I would like to share certain slides that during the lockdown, what we have done and how Platinum has implemented, a lot of things during the lockdown, right? So I'm just going to share, just give me a moment. Simar, am I audible, Simar? Yes, sir. Haji. So each one of my session will have somebody like this. मेरा बच्चों के साथ इतना है कि मैं अगर बोलूँ सुमित बेटे आपको आके प्रेजेंट करना है, तो सुमित भी अपना स्टोरी बताएगा. तो एवरी संडे ऐसा एक केस होगा विच आई विल. आप लोग सब अच्छे हो बेटे, ऋषि भी अच्छा है, सुमित भी अच्छा है, राइट, आनंद भी अच्छा है, सिमर भी अच्छा है, लेकिन मैं एक एक केस स्टडी बच्चों को बताऊंगा 10-10 मिनट के लिए. मैं कृष्णा को क्यों सेलेक्ट किया वो भी बताता हूँ. From the bottom, this boy is rising. My kid is rising, which is the reason why I called him. Second lockdown period, he has really worked well. Really worked well. Over to you, Krishna Bete. Please go ahead. Right, thank you. First of all, I am really thankful to you, Menon sir, that you've really guided me. You are my mentor, my guru, and I am really fortunate to have you besides me in terms of everything that I'm doing today. So I would like to start with a small discussion about myself. That's Platinum Industries. I am the CEO of the group, Platinum Group, and just a small introduction. Basically, Platinum is into manufacturing of specialty additives. So these specialty additives are
used as a chemical for the plastic industry. So what do you mean by plastic industry is PVC starts degrading at 60, it doesn't melt, all right? So this chemical is the heart of the PVC industry. So when you say that, you're supplying a product which is the heart of the industry, how important it is for all the manufacturers across the globe. So we are the second largest in India by the capacity for lead-free additives and organic additives in the country. We have adopted an European technology to the Indian raw materials. And this is a collaboration done with one of the world's best scientists, who has joined on board to our company. The company today is growing at 200% year on year. And this is not a joke. 2016, we restructured and restarted, as Sir rightly said, that, we had completely stopped all our business in 2016 due to some major debts that had come to the company. And we really fought that and we restarted everything again. And today the company has reached to a level where it's growing at 200% year on year. Class, I think I should interrupt at this point. Why did I select Krishna? Because I don't want to offend anybody. I selected my kid Krishna because he was jailed. He is the first civil arrest of India. My kid was jailed because his customer filed a complaint and my kid, जो देख रहा है ना मेरे बच्चे को आप, so आपको किसी को hurt नहीं करना है बेटे, क्योंकि आप लोग इनसे भी बड़ा हो सकते हैं, मुझे मालूम है. मैं कृष्णा को क्यों बुलाया? He is the first civil arrest of the country. और आज वो मेरा बच्चा बता रहा है कि मैं जेल से वापस आके मैंने नया कंपनी स्टार्ट किया and I'm growing 200% year on year. Okay, तो मैं वो क्लियर आपको बोलना चाह रहा हूँ. All of you are very good, but the reason I selected Krishna is, and this is the reason I am associated with him. I don't want him to go through these times again. Now watch. So this is Platinum ka introduction, right? And now watch what the next 2 or 3 slides will tell you what you should do. And Krishna also will share his slides with you all. Definitely. Go ahead, Krishna. Thank you, sir. So Platinum has also set up an R&D center for the analytical and the application lab. We lay more emphasis on the application lab because we've invested big time. Whatever machine our customers are having, we have a pilot machines in our plant to understand, how our product is going to perform at the customer's end. So we have invested big time in the application lab for all our customers. Now, vision is very short, but it gives an immense pride, that our vision is to have 50% market share globally by 2025. And we are already working towards it. Lockdown is the talk of the town right now. And I'm sure everybody is thinking and coming out with different ideas how to, work in this lockdown period. Some may think that it is a boon. Some may think it is a curse. People are complaining. I talk to so many people, across India to my customers, and they are saying that, we are bored at home and we don't know what to do. But for Platinum, definitely it has been a boon. We became more proactive. We were stress-free with promising results. And what do you mean by proactive is we got so active that we have done big seminars for more than 1,000 participants in this time. And we got connected to more than 2,000 customers. You can imagine, which we wouldn't have been able to do it even in the normal times, but in the short span we connected to 2,000 customers. We say that an idle mind is a devil's workshop, but Platinum team proved this wrong. My entire team at Platinum has done immense hard work to even put our company where we are currently. Working for longer hours, even in lockdown, we are working for really long hours than a normal day. Because I keep talking to Menon sir also, and at 12 o'clock in the night also he's asking me certain questions that did you implement this, did you implement that, and at 12 o'clock in the night also I have to answer to him. But yes, family is still complaining, you're not giving us time. This is a question to everybody, that my family is still complaining that you're not giving us time. The best part is the interpersonal relationships between the departments became so strong that it led to a better coordination between all my employees. They are coordinating so well, that today everybody is doing everybody's work and they are supporting each other in terms of better results. So now
going back, sir, what a lovely presentation you gave. I think I was actually feeling in the place that what all we have done, and I could actually visualize your entire presentation. What did Platinum implement? Sometimes the smallest change in your organization brings the biggest result oriented area. So we designed SOPs for all the departments. We didn't even know, how a front desk officer would perform. So we designed a flow chart. So from the front desk to the plant, we have designed each and every SOPs for all the departments. Best part is during the lockdown period, we have orders for 5 containers. Immediately when the lockdown is over, you have to dispatch these 5 containers. We have orders from Qatar, we have orders from Bangladesh, we have orders from Sri Lanka. The reason is we got connected to all the customers one-to-one. As sir rightly said, Krishna, but sorry to interrupt. I think just Sachin and Tushar are saying, can you make it full screen? Can you make your this thing full screen? Sorry, bete, sorry. So one big learning that I am requesting all of you all is widen your, please widen your customer base, right? As any expert would tell you, please widen your customer base. That's the point I'm trying to tell you. Go ahead, bete. So how did Krishna do it? He did it. Krishna is associated with a very big technology expert, right? So yeah, he got a seminar done. Simarpreet is doing it by conducting free webinars. I'm sure each one of you are doing it, but please try and reach out to maximum people, have visibility. Would right? Would maximum visibility. Please continue, but please continue. So we conducted seminars for all the domestic customers. We conducted seminars for all international customers. For domestic customers, how we did, we separated the key accounts and we separated the common platform for customers. For key accounts is like we are dealing with companies like Supreme Industries, who are the god of the industry for plastic, Prince pipes and fittings. Now what we did, they have 10 to 15 different plants. So we connected to all their head of the departments. We connected to all the production people who are handling the entire plant, and we did a separate seminar, and we got really good response from them that we could share the ideas, the problem areas that we have faced, and how we can improve their production. So this gave us an excellent mark of relationship with all key account customers, also on the common platform. The best part is like, in this lockdown, we have covered 50% of the ERP system manually. And I want to tell you how that we have developed coding systems for all the raw materials and finished product by having a store layout. We gauge the efficiency of all the employees, wherein we feel that, we sometimes are gauging that, this is the best and this is, weak. But in this time when we are gauging it, we actually came to know that even the weakest, how strong they were in terms of giving the results. So, we could actually gauge the efficiency of our people that led to, our bright future. We also implemented the ASK model in the HR system. With ASK Krishna, model basically. I'm sorry to interrupt. Krishna, if you could speed, no, you're doing very well. If you could speed up a bit, there are some more points I want to say. So go ahead, you're doing well. Right? Sure. Yeah. So we also implemented the ASK model in the HR. We did data collections for all the raw material. Now data collections is we have today the data of all the customers for all the competitors who are exporting the products from India to everywhere in the world. We have the data also of the raw material which are imported to the country, so that we can gauge that whether we are giving the higher price for the raw material or the lower price. We did parallel vendor development training for the R&D department. The best part that the manager could guide us was to create a business plan, that what we had budgeted in the month of February. We budgeted that this year Platinum did 100 crores of turnover. We budgeted for 250 crores, but because of the lockdown, we had to revamp the entire business plan. So we're working on that. We patented few products in Asia and UK. For India, it is very compulsory. Why I'm pinpointing this point is, if you want to be faster in terms of grant for patents, you have to file it in UK first and parallelly file it in India. This is a very important point which I would like to tell everybody, that while filing a patent, it is better to file a patent for any product first to apply in UK for the grant and then apply it in India. The grant is much more faster. With respect to the raw materials, we did an ABC analysis, BD analysis, lead time analysis.
And the best part, I spoke to all the stakeholders. That includes the banks, employees, customers. How did it help me? When I spoke to all the suppliers also, we got a big negotiation in terms of discounts. Now we are getting very good payments from all our customers. Our customers are paymasters. When we accommodated a single amount in our account, okay, and we started negotiating with the suppliers that we are paying you in full, okay, give us certain discounts, 3%, 5%, and that accumulation was used to cater to our fixed cost that the company was bearing. And this is how we could plan our finances. Sorry. We could discover the mistakes. Sir rightly said insurance, how important it is. I realized that I was underinsured. I realized that how I did not negotiate well with the insurance companies. We revamped the entire insurance policy, and we negotiated a lot on the riders, which was a eye opener for me as well. We are focusing big time on export customers. As we all are reading that government is coming with big stimulus package for all exporters in India. This is the small implementation that we have done during the lockdown period, and we are still working for future. Thank you so much, everybody, for listening to this. Thank you, Menon sir. Thank you, Bete. Sir, this is an unstoppable thing. I could speak for hours, but... Thank you. So the purpose of this, I also realized why did I do this? The reason I did this is, one, to say that you have to do it. It is not, what I spoke today is not theory. It is practice. You have to keep doing it. All right. I need to clarify. I'm not looking for assignments. You can anytime come back and ask me. There are better consultants. I keep saying that there are better consultants who do a far better job. But beta itna basics to aap karna hi chahiye. A couple of things I want to say, but I'm not saying I'm selfless. I'm not. आजकल रामायण चल रहा है तो a lot of people, my son says राम, मैं राम नहीं हूँ. There is a selfish interest to this entire thing also. मैं आपको बता देता हूँ क्या है selfish interest. But before I close, right, सिमर बेटे part 4 है क्या? A request to all of you all, right? Part 3 is done. Right, my last 2 minutes with you all. Right, you have to write to me what we should, right? We should, what you want me to do next time. What you want me to do next time. I promised you, I'll take 1 hour 15 minutes. I'm done. I know attention span is less. I know my FMB kids, okay? And I was constantly looking at participant list also. Right, Simar, nothing has changed. मेरे बच्चे ही रह गए. I'm so happy. Okay, I'm so happy. Okay, Krishna, thanks. Yeah, but you did a good job. Next time again, one more person will speak. The idea of speaking is one, right, to tell you that what all you could do. अच्छा बेटे एक last point आपसे बोलना है, मैं डाला नहीं है. You can tell me next time क्या cover करना है, मैं करूँगा cover. Don't invest in yes, that I will cover. Next time I will talk about this. Individual stocks में पैसा नहीं डालना. Please don't put money in individual stocks. My humble request. बहुत सारे calls आ रहे हैं, WhatsApp आ रहे हैं. I'm not able to answer all calls, लेकिन मैं WhatsApp message voice में वापस दे लेता हूँ. सबको publicly request कर रहा हूँ. Don't invest in individual stocks. I'll come out with a plan for investment planning. मैं आपको बताऊंगा. There will be a separate session on that when I will try to tell you. But at this stage, I want to say, do not invest in individual stocks. And the best example is what Mr. Mukesh Ambani has done. In these times, the guy rocks. अब देखिए ना, everybody is saying negative things. उसने Facebook के साथ deal करा दिया, and now, right, he's put India back into action. I think you should read that case study. My humble request is, you, of course, I don't know him, I would have got him to speak to you all, right? But the fact is, that's a great case study to read. But I'm stopping. Next Sunday, again, we'll meet at this time. Simar has been very, very kind to organize this for me, and I thank all of you all. But before I go, there's a personal appeal. This is not a selfless thing. I want you all to do something. There is something I want you all to do, and this is not for me. This is for the society abroad. Okay, जो बाहर है ना, उनके लिए तो तकलीफ है. So I will go to the next 3-4 slides and I will end. It's my personal appeal for a social cause. Simar, next slide. But people are dying of hunger. Okay, people are dying of hunger. Okay, I am again personally appealing to you all. Humble request. Simar, next slide. I want you all to donate. And I'm not asking you all to donate too much. I'm not asking anybody to donate too much.
Janelle, मेरे बच्चे, अरे so good to see all these ex students. I love you all. ये सब 10 पहले पहले के मेरे बच्चे हैं. God bless. I don't know how you all came in, but I didn't mark it. Thank you again, यार. Right. Next slide. So there is a group which is known as the Collective Hunger Group, which is started by a student, right? They are trying to reach out to people who are at the lowest. I am not doing this, right? There is a selfish interest. This is my selfish interest. Okay. Next slide. So you have to send some money. They will, it is completely foolproof. Your money will go to feeding somebody for a week. They will send you the details. They will send you the details of whom they are feeding. Okay. And how things are. Okay. So basic appeal is please help the lower margin society. अच्छा लगा यतिन ने, यतिन इज माय फेवरेट, ही इज ए रेस्टोरेंटर, उसका भी मैं देख रहा था चैट्स में, सबको हेलो हेलो मैं बोल नहीं सक रहा था, राइट. यस ब्रजेश, अब भी क्वेश्चन आंसर नहीं बेटे, मैं एक एक क्वेश्चन लेके उसका एक सेमिनार ही बनाऊंगा, पक्का पक्का, राइट. नेक्स्ट स्लाइड. यू कैन ड्रॉप मी अ मेल और ड्रॉप ए व्हाट्सएप. बेटे ज्यादा आप डोंट एक्सपेक्ट मी टू आंसर कॉल्स, नहीं होगा रे बच्चे, राइट. डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, नहीं होता है तो मैं डेफिनेटली रेस्पॉन्ड करूंगा, बट आई विल सेंड यू ए व्हाट्सएप मैसेज. मुझे भी अच्छा लगता है आपका आवाज सुनने के लिए, बट लंबा कन्वर्सेशंस नहीं हो रहा है. आई एम श्योर यू हैव रियलाइज्ड माय थ्रोट इज आल्सो गिविंग अप. ओके, सो प्लीज ड्रॉप ए व्हाट्सएप, ये मेरे नंबर्स है, राइट. जो भी आपको लगे क्वेश्चंस मैं नोट करूंगा. सिमर इज डूइंग इट एंड सिमर टीम इज डूइंग दैट, राइट. वो पूरा नोट करके नेक्स्ट सेशन को आपको क्या चाहिए वो भी बता दीजिए. आई विल प्लान. अगर मुझे आता है तो मैं करूंगा, नहीं आता है तो मैं पढ़ के करूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए. यस, for the social cause, what am I appealing? The last 2 slides, please. Simar. Yeah, this is my email, right? Simar, आपको आपका email देना है बच्चों को, right? This is, thank you for your attention, बेटे. बहुत अच्छा लगा. Thank you very, very much, right? What is it that I want you all to do is 2 things. Next Sunday, same time, discussion continues. आपको क्या topic चाहिए, आप please लिखिए. I will do it. Please write to me if you want to donate for that cause. The amount starts from 200 rupees. 200 rupees hai. So if you want to feed one family, 200 rupees hai. You want to feed 5 families, 1000 rupees hai. बेटे मैं amount नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा if you can contribute to this noble cause. We are better off. लेकिन बेटे बहुत तकलीफ है बाहर. Okay, तो Ashlesha is the name of my student who is coordinating with a lady known as Sai. मैं folded hand से request कर रहा हूँ, please support this cause. Right, people are dying of hunger. Let's do something for the world. My course is absolutely free. Okay, absolutely free. The material will come from dear Simar. वो आपको आएगा. You can take it. Right. Thank you and God bless you always. Thank you very much. Thank you very, very much. Dr. Menon, before we just close down, there have been a lot of messages that I've been also flooded with. मुझे सर जैसे next Sunday हमने करना है, आप एक बार can you just very quickly for next 2 minutes can you just brief the future plans? How do you want to take this forward? And because there have been almost 20-30 messages I've also received that इसको आगे कैसे plan करें? Can you just share your very brief vision with all my batchmates or my fellow colleagues also? Yeah. Hello, Smita. Hi, Rosh. So good to see. ये सब मेरे बच्चे हैं यार, देख के खुश होते हैं. हर एक का नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं, बट ये प्लान ऐसा है कि I will continue till you are all interested. You have to tell me what is the topic that you want me to speak. आज मैं इंश्योरेंस की बात किया, मैंने 7C मॉडल दिया, आपको इसके ऊपर काम करना है. नेक्स्ट संडे मैं आपका रिक्वेस्ट देखूंगा, आइदर थ्रू सिमर या मुझे डायरेक्टली दीजिए. सिमर बच्चे आपके ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रहे हैं, प्लीज इफ इट इज ओके आप दे दीजिएगा. आई विल सी द टॉपिक्स, मेजोरिटी क्या है वो देखूंगा. और एक बात बोल रहा हूँ, अगर मुझे आता है एंड आई फील कंफर्टेबल, मैं वो टॉपिक उठा के पढ़ाऊंगा. दिस सीरीज विल कंटिन्यू एवरी संडे, right, till the time I feel I've added value, right, to participants. So this time it was on a very short notice. Again मैं वो बच्चों का नाम लिया, ये लोग 2-3 हफ्ते से पीछे लगे थे. Finally I became bold कि चलो ये भी करके देखते हैं, and I'm so happy it worked out well. Right, next time's topic, मुझे लग रहा है there is a lot of demand coming on investments. So I will, next Sunday we will talk about investments, but you are free to keep writing, right? If it is not investments, you want something else, I'll do it as per your cost, right? कब तक चलेगा सिमर? I leave it to God, I leave it to participants, I leave it to my health, as simple as that.
एटलीस्ट नेक्स्ट संडे होगा, उसके आगे देखते जाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट सर। मैंने अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं, सारे बैचमेट्स हैं, मैंने अपना ईमेल आईडी भी डाल दिया। इट्स sp@hatek.com एंड यू कैन व्हाट्सएप मी आल्सो। एंड मैं एक और बात बताना चाहता हूँ बिफोर वी क्लोज डाउन। मैं और सर कल रात को बात कर रहे थे। सर कहते बच्चे मुझे लगता नहीं 50 भी लोग आएंगे। मैंने कहा सर आप कोई भी टाइम फिक्स कर दीजिए और आप देखना मिनिमम 300 लोग आएंगे। एंड just to update you, we've on average we had 356 people speaking. So once again, thank you so much, Dr. Manan, for doing this. It's always a pleasure. And मेरे घर पे just to update, my parents are sitting downstairs, headphone लगा के वो सुन रहे हैं. My wife on the other room is saying, my sister दूसरे room में सारे सुन रहे हैं घर पे. But it is a pleasure. Thank you so much once again. We'll be back next Sunday. We'll share all the details with everyone of you. Thank you, Krishna. You're an inspiration to everyone. Thank you to the entire team, participants who do this. Thank you so much. Thank you, Simarpreet. Thank you, Simarpreet. Thank you all of you. Thank you. God Thank bless. you, everybody. Thank you, everybody. Thank you.